हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। तो जैसे कि बहुत सारे भक्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम जो नेक्स्ट वीक प्रोग्राम करने वाले थे उसे हमने आज ही कर लिया है, QA सेशन। और उसके साथ ही आज हमारे स्पेशल स्पीकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी, जो कि 7:45 पर हमें साथ जुड़ेंगे, जब तक हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। बट उसके पहले हम शुरुआत करते हैं हर सेशन के कीर्तन के साथ। तो हमारे बीच कीर्तन करने के लिए हैं आर्यन जैन प्रभु जी। प्रभु जी इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड। उसके बाद प्रभु जी बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं। मैं प्रभु जी को इनवाइट करना चाहूंगा, लाउडली चैंटिंग हरि बोल। तो आर्यन प्रभु जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Bol. तो थैंक यू सो मच आर्यन प्रभु जी, बहुत ही वंडरफुल एंड मेलोडियस कीर्तन था। समय खो गए थे आपके कीर्तन, आप जब कीर्तन कर रहे थे। सो एक बार चैट बॉक्स में आप सभी लिखें आर्यन प्रभु जी की जय। Thank you so much, Prabhu. सो हरे कृष्णा, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो हमारे बीच हिज ग्रेस नागर कृष्णा प्रभु जी आ चुके हैं, तो अब हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर,
और फिर 7:45 पर हमें हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी ज्वाइन करेंगे, जो कि रशिया में मॉन्क हैं। तो जब तक हम Q&A स्टार्ट करेंगे, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हिज ग्रेस नागर कृष्णा प्रभु जी का। प्रभु जी इज डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एंड प्रभु जी लास्ट 18 ईयर से कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहे हैं। और प्रभु जी इसके साथ ही बेस के एजुकेशन CSU है, मतलब कि प्रभु जी जितना भी बेस का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, प्रभु जी इसको हैंडल करते हैं। और अभी करेंटली प्रभु जी HT मीडिया लिमिटेड में एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रभु जी सभी को गाइडेंस देते हैं एंड हेल्प करते हैं। तो प्रभु जी के साथ जो भी जुड़ता है वो भक्त बन ही जाता है। तो अब हम ज्यादा यहाँ पर मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हिज ग्रेस नागर कृष्ण प्रभु जी को बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र से वेलकम करें प्रभु जी का। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नागर कृष्ण प्रभु जी। या कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस प्रभु जी। ओके। यस प्रभु जी, यू आर ऑडिबल। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। सो अब हम जो है लगातार 4 सेशन है ना, 4 सेशन हो गए हैं, और 4 सेशन से हम जो है बहुत वरिष्ठ भक्तों से सुन रहे हैं, और काफी सारे प्रश्न हैं आपके। इससे पता लगता है कि हमारा जो है रुचि है कि हम जो है चीजों को समझें। हमारे शास्त्रों में जो है 4 वेदास, 108 उपनिषद, 18 पुराण और वेदांत सूत्र, बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं होंगी। तो उसमें एक उपनिषद है, 108 उपनिषद में से एक उपनिषद है जिसका नाम है केन उपनिषद। केन मतलब क्यों। तो उसमें क्या है, सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है, प्रश्न आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। और जैसे ही हम भी जब जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, तो हमारे बचपन से ही जो है शुरू हो जाता है प्रश्न। पहला प्रश्न क्या होता है, जैसे बच्चा जब उसका जन्म होता है, पहला प्रश्न होता है कि मेरा खाना कहाँ है ना। और फिर जो है माँ उनको अपना दूध पिलाते हैं। तो इस तरह से जो है प्रश्न शुरू होता है बचपन से ही। और उसके बाद जैसे हम बड़े होते हैं तो हर चीज पूछते हैं, हाँ? अपने पिताजी, अपनी माताजी को, ये क्या है, ये स्पीकर है, ये क्या है, ये टेबल है। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्यों पूछते हैं, हाँ? क्यों प्रश्न पूछते हैं? इसलिए प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में, ताकि हम उससे देख सके हमें क्या करना है, उसका क्या उपयोग क्या है। कोई भी चीज जो हमारे सामने है उसका क्या उपयोग है। सो ये जो प्रश्न उत्तर है ये सृष्टि से शुरू से चला आ रहा है और अभी तक है, और यह हमेशा तक ही रहेगा। तो प्रश्न हमें पूछने चाहिए, और अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा रुचि है, हम बढ़ना चाहते हैं आगे, हम चीजों को समझना चाहते हैं। तो काफी सारे आपके प्रश्न आपने पूछे थे। कुछ भक्तों के प्रश्नों के आंसर भी मिले और कुछ के जो है नहीं भी दे पाए। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, तो हम ट्राई करते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो हम गुरुदेव, प्रभुपाद, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके आंसर जो है शास्त्रों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। ओके, सो who will go first? Let me see. सो प्रभु जी आप अनम्यूट करेंगे? यस प्रभु जी, कर दूंगा। ओके, यस।
सो आप सभी से एक तो रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप वीडियोस ऑन करके पूछें, तो जो जिनके वीडियोस ऑन रहेंगे तो हम उन्हें प्रेफरेंस देंगे पहले। तो फर्स्ट शुभम प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे चैंटिंग में मन नहीं लगता है, मेरा प्रश्न ये है कि चैंटिंग करने को ही नहीं मन करता, ऐसा क्यों? ओके, सो चैंटिंग करने का ही मन नहीं करता, ये प्रश्न है आपका? हाँ जी प्रभु जी। ओके, तो हमने जैसे कल सुना था और शास्त्रों में हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धये। तो बहुत बहुत जन्मों के बाद या फिर बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो एक तो है कि मनुष्य में बहुत बहुत हजारों हजारों मनुष्यों में जो है कोई एक विरला ही है जो भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, और उसमें से भी बहुत विरला है जो भगवान को जो है जान पाता है। तो और दूसरे में बताया है क्या, बहुनाम, जो बहुत बहुत जन्मों के बाद जो है, जब जो है भक्तों के संग से उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो जो है भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो जैसे कल हमने सुना था हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी से कि जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों के संग करने से जो है हमारा इसमें क्या है, रुचि होगा। अगर आप जुड़े हैं किसी ना किसी तरह से और आपने देखा है कि माला करने से अच्छा जप करने से ये होता है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, तो जैसे बताया था फर्स्ट थिंग क्या था कि हमारे पास जो है वो गोल होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड बी विलिंग टू डू दैट। नहीं हो पा रहा है, दैट इज सेकेंडरी। फर्स्ट इज वी शुड हैव दैट इन आवर फ्रंट कि मैं जो है माला करना चाहता हूँ। और फिर सेकंड क्या है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन भक्तों का संग करना पड़ेगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति जो है बचपन से ही कोई गलत कार्य नहीं सीखता है, उसको संग की आवश्यकता होती है, शुरू में नहीं करेगा। इनफैक्ट जो भी गलत कार्य करते हैं, इनफैक्ट जैसे कि लिकर ड्रिंकिंग है या फिर स्मोकिंग है, तो जो करते भी हैं वो भी शुरू में जब पिए होंगे तो बहुत खांसी आया होगा या फिर बहुत ही बेकार लगा होगा, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द एसोसिएशन। जितना आप संग लेंगे, संग के माध्यम से ही जो है आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है किस तरह से जो है इनिशियल हमारे पास एक होती है श्रद्धा, इनिशियल हमारे पास क्या है, फेथ है, एंड दैट फेथ हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फर्म फेथ, जो कि कैसे होता है, सेकंड स्टेप बताते हैं, साधु संग। तो साधु संग करते हैं जब, तो फेथ डेवलप होता है। हाँ, उसके बाद फिर भजन क्रिया में हम बढ़ते हैं, भजन क्रिया का अनर्थ निवृत्ति। तो इस तरह से जो है स्टेप्स है। तो आप चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, हाँ? चाहते हैं, आपने सुना है माला करना चाहिए, हाँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे तो आपको संग करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट सलोनी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जो जैसे मैं हूँ तो मैं एक विलेज एरिया में रहती हूँ, और विलेज एरिया में रहती हूँ उसकी वजह से यहाँ कोई इस्कॉन सेंटर भी नहीं है और कोई डिवोटी एसोसिएशन भी नहीं हो पाता है। तो मतलब मैंने जो कुछ भी सीखा है वो ऑनलाइन सीखा है। सो मैं क्या कर सकती हूँ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड गए थे 1965 में, बॉस्टन पे जब पहुंचे फर्स्ट टाइम, वहाँ के जो पोर्ट, बॉस्टन पोर्ट, तो वहाँ पे देखा कि किस तरह से लोग हैं, और उसके बाद फिर अपना ये मिशन शुरू किया। और अब प्रभुपाद जी अकेले हैं और पूरे संसार में जो है कृष्ण भावना को जो है विस्तार करना है। तो प्रभुपाद जी जो है कुछ कुछ कंट्रीज में जो है एक दिन 2 दिन ही रुके, वहां पे एक भक्त को बताया और फिर उसने ही आगे प्रचार किया। और कुछ कंट्री में तो एक बार गए, उसके बाद तो कभी गए ही नहीं। और काफी सारे ऐसे भक्त थे जो जिनका बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न था कि हम तो मिल ही नहीं रहे, हम कैसे दीक्षा मिलेगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने जो है उनको किसी किसी को तो जो है ऑनलाइन ही दीक्षा भी दिया।
हालांकि अभी तो हमारे पास, वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम ट्रैवल करके भी जा सकते हैं। बट उन दिनों में जो है कंट्री से कंट्री, विद इन कंट्री तो फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कंट्री से कंट्री ट्रैवल करने के लिए काफी खर्चा भी आएगा, एफर्ट भी डलेगा। उसके बाद उस वहां पर जो है ऐसी फैसिलिटीज थी। तो अभी क्या है कि खासकर ये जो कोरोना काल चल रहा है या फिर ऐसी सिचुएशंस है, हाँ, जहाँ पे कि हमारे सेंटर्स नहीं है आसपास। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कि इस्कॉन मंदिर देखा ही नहीं, 16 माला करते हैं और बाद में जो है दीक्षा लेने के लिए सच एंड सच स्टेट जाते हैं, या फिर जहाँ पे भी वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं उनसे दीक्षा देते हैं। तो अगर आप गांव में है जहाँ पे कि इस्कॉन अभी सेंटर नहीं है, और ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे हमने कल भी सुना था, ऑनलाइन के माध्यम से आप जो और माता जी हैं, उनके ग्रुप से जुड़ करके अपना जो ये कन्विक्शन है टुवर्ड्स हरि नाम, उसको आप मजबूत बनाइए। और एक समय आएगा जैसे कि आप स्टडीज भी आप रेगुलर करते रहिए, भागवतम, भगवत गीता, ईशोपनिषद, इस तरह से जो शास्त्र है सीक्वेंशियली पढ़ाया जाता है। आप जो है किसी न किसी ग्रुप से यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े ही होंगे, या अगर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आता ही ऑलरेडी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे लेवल वाइज जब स्टडीज होंगी, ऑनलाइन स्टडीज भी जब करेंगे, तो आप धीरे धीरे जब एक कन्विक्शन आएगा, देन यू विल हैव अ कनेक्ट विद your some of the gurus which is connected to Prabhupada, और फिर दीक्षा लेने का भी समय आएगा। तो अभी के लिए जहाँ पर भी हैं आप अच्छे से अपना भजन कीजिए, और जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है वहां से जुड़ करके अपने राउंड्स कीजिए। प्रभु जी, अगर घर में सब लोग नॉन डिवोटी हैं और वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा बताया जाता है, तो एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा था एक प्रभुपाद जी के शिष्य से कुछ स्टूडेंट्स ने, कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्ण भक्ति में बढ़ते हैं तो हमारे माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं। यस प्रभु जी। तो वहां पे उनको एग्जांपल देते हैं। आपने प्रहलाद महाराज का नाम सुना है? हाँ प्रभु जी, सुना है। तो वो जो है प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हैं वो डिवोटी घर में थे क्या? नहीं, वो ओके, डिवोटी के घर है में ना? नहीं थे। और उनके माता पिता, उनके जो पिताजी हैं, क्या किए उनके, हर कोशिश की है कि ये कैसे पैदा हो गया मेरे घर में ये भक्त, इसको तो मर जाना चाहिए। उसको आग में जलाया, सांप के बीच में बिठाया, पहाड़ों से नीचे गिराया, हाथी के आगे रखाया, और कुछ भी नहीं हो रहा है। एटलीस्ट हमारे माता पिता ऐसे तो नहीं है, राइट? यस प्रभु जी, तो ऐसे वी आर नहीं है। फॉर्चुनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बाइबल बताती है कि वी हैव टू काउंट द ब्लेसिंग्स। व्हाट ब्लेसिंग्स डू वी हैव? सो तो जैसे कल भी बताया था शायद, डोंट्स की तरफ जो है ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाना, बिकॉज कलयुग है ना, नेगेटिव्स विल अट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, आपके ना चाहते हुए भी। तो इसीलिए बेटर क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उनका सारा ले जो पॉजिटिव्स है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे जैसे खिलौना है फॉर एग्जाम्पल, और बच्चा क्या खिलौना है उसके छीनने की कोशिश करो तो वो और पकड़ेगा कस के, है ना? यस। नहीं ले देगा। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो जबरदस्ती करो, दूसरा क्या है, दूसरा खिलौना दिखाओ उसको, है ना? वो छोड़ देगा, कहेगा अरे यही चाहिए। हाँ। यस। सो प्रहलाद महाराज जो है उनके पिताजी, वो चाहते नहीं थे कि ये भक्त बने, इतना ये असुर बनना चाहिए। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे उसके अंदर दो क्वालिटीज था, क्वालिटीज तो बहुत सारे थे, लेकिन दो चीजें जो है वो बहुत सूक्ष्मता से और बहुत एकाग्रता से करते थे। पहला, he was steadfast in his कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपनी भक्ति में बिल्कुल पक्के थे वो। सेकंड, he was very polite, very gentle, very respectful towards his parents, है ना? तो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई जब अच्छे से करेंगे तो सब पूछेंगे अरे आपने कैसे किया। जैसे कि आज भी जब पूछते हैं कि आपने इतना सक्सेसफुल हुए तो कैसे हुए, तो लोग नाना प्रकार की चीजें बताते हैं। मैंने ये किया, मैंने रात को 10-10 घंटे पढ़ा, कहीं बोलता मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे खेलता रहा, कुछ बोलता कि मेरा इंस्पिरेशन मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर ये सेलिब्रिटीज है। तो जब आप को पूछेगा तो फिर आप बता सकेंगे कि मैं जो है
ये जो जपा करती थी उससे क्या होता था, मेरा फोकस होता था और फोकस से मैंने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। तो नेगेटिव्स की तरफ ज्यादा नहीं देख करके हमें पॉजिटिव्स यानी कि जो ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करके चलना है आगे। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न और था कि जो तुलसी पत्र है वो हम किसे किसे ऑफर कर सकते तुलसी जो है सिर्फ विष्णु तत्व को ही ऑफर होती है। हाँ, जो भगवान तो कृष्ण हम राम, बलदेव जी को भी ऑफर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते। ओके। और चैतन्य महाप्रभु को? चैतन्य महाप्रभु को ऐसे डायरेक्टली ऑफर नहीं होता, बिकॉज हम जब ऑफर करते हैं तो अम, वैसे कर सकते हैं, बट इसको मैं क्लियर थोड़ा इसको पता करना पड़ेगा मुझे भी। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु को वैसे करते तो हैं, लेकिन स्पेशली जब ऑफर करते हैं, खासकर ना ऑफर में, क्योंकि भगवान को जो है पसंद है। विष्णु तत्व तो है, लेकिन क्योंकि वो भक्त के रूप में आए हैं ना। बट आई थिंक दिस क्वेश्चन वी विल पार्क। हाँ, थैंक यू फॉर ओके आस्किंग दिस प्रभु क्वेश्चन। जी। सो ऑर्गेनाइजर कौन है जो भी है, इनको लिख लीजिए हरे दिस कृष्ण प्रश्न। प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। So we'll take this question. No, we'll park this question. ओके, थैंक Okay, यू प्रभु next जी। question. Yes. नेक्स्ट अमित कुमार प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। कृष्ण। वैसे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर सोनी माता जी से मिल गया, फिर भी मेरे पास एक दो क्वेश्चन और है प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ। यस प्रभु जी। जैसे कि प्रभु जी आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ 3 बच्चे और बैठे हुए हैं। ये 10th और प्रभु जी आप इनको कर सकते हैं? हाँ, यस यस प्रभु जी, यस, तो जी देख प्रभु पा रहा हूँ। जी। तो ये लोग 10th और 12th का बोर्ड देने वाले बच्चे हैं। तो मैं जब भी, एक्चुअली मैं सहरसा में रहता हूँ और मैं स्टूडेंट प्रोफेसर हूँ सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और यहाँ मैं अभी घर पे आया हूँ छुट्टी में। जब भी मैं छुट्टी में आता हूँ तो मैं इन लोगों को थोड़ा गाइड करता हूँ, कई बार मैं इन लोगों को डांट भी लगाता हूँ, ये लोग ठीक से पढ़ते नहीं या जो भी मुझे लगता है गलत कर रहे हैं। तो कई बार कुछ अधिक हो जाता है तो मुझे लगता है कि पता नहीं एज अ इस्कॉन डिवोटी मुझे इतना गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन लोगों पे। और कई बार इन लोगों को भी बुरा लगता है कि ये मैं इनके रूम में रेंट पे रहता हूँ तो इसका क्या अधिकार है इतना बोलने का, ये क्यों बोलते हैं, मैं इनको पे करता हूँ रहने के लिए। तो मुझे इस पे क्या करना चाहिए प्रभु जी, मेरा ये पहला प्रश्न था। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कोई भी चीज का आदान प्रदान होता है प्रभु जी, आपके कैसा आपका कनेक्ट है उन व्यक्तियों के साथ, है ना। जैसे कि बच्चे का जो है माँ बाप के साथ जो कनेक्ट होता है वो माता पिता का है, तो माता पिता डांटते भी है ना, उनको पता है कि डांटने से भागेगा नहीं है। ही विल स्टे। जी और वो डांटते भी इसलिए नहीं है कि उसको भगाने के, उसके लिए डांटते हैं उसके अच्छे के लिए। तो फर्स्ट जो है हमें क्या करना पड़ता है, पहले कनेक्शन बनाना पड़ता है। पहले हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ही जो है हम करेक्ट करते हैं। कनेक्शन के जी बाद ही करेक्शन होता है ना। जी तो पहले कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे प्रभुपाद जी जब यहाँ से जब अमेरिका गए, अमेरिका में कोई नहीं है उनके लिए, और कौन क्या करते थे, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क जो है वहां पर एक वृक्ष के नीचे जो है कीर्तन कर रहे हैं, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे, कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पे। और वहां पे आ कौन रहा है, हिपीज लोग आ रहे हैं। हिपीज लोग कौन, जी जो चरस गांजा ये सब चीजें पीते हैं, गलत कार्य में लगे रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है प्रभुपाद जी जो है उनको क्या किया, सर्व किए। सर्व मतलब सेवा किए। प्रभुपाद जी सन्यासी हैं, सन्यासी की तो लोग सेवा करते हैं। हाँ, लोग सेवा करते हैं, वो सन्यासी जो है वहां पर क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उनको इनवाइट करते थे घर में। अब ये तो नशे में आते थे, प्रभुपाद जी उनके लिए प्रसाद बनाते थे, वो आते थे, कीर्तन सुनते थे, खाते थे और प्लेट वहीं छोड़ के चले जाते थे। तो पहले क्या किया, कनेक्ट किया प्रभुपाद जी, है ना। और उसके बाद आप अगर आपने सुना हो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, तो प्रभुपाद जी उनको कई बार बोलते हैं यू रास्कल, यू फूल, अपने ही शिष्यों को बोलते हैं। जी तो जी क्यों, क्योंकि अभी कनेक्ट हो गया ना, नाउ दे विल अंडरस्टैंड। सो आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आपका कैसा कनेक्ट है। अगर आपके गुस्से से वो फिर भी दे आर स्टिल हियर, वो अभी भी बैठे हैं सुन रहे हैं, तो आई थिंक कुछ गलत नहीं है, बिकॉज आप उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। हो सकता है कि वो समझे ना, लेकिन समझ रहे होंगे तभी वो फिर भी जो है करेक्ट होना चाहते हैं, और स्टिल दे आर स्टिल सिटिंग विद यू। सो अपने आप को भी कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, आपको भी अपने जो
जैसे कल बता रहे थे कि हमें एक हमारे साथ कोई ऐसे होने चाहिए सीनियर्स जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सके कि मैं जो कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ क्या। जैसे आपने मुझसे पूछा है अभी, राइट, तो अभी हमारा कनेक्ट जो है सिर्फ इसी पर्टिकुलर समय के लिए है, लेकिन एक व्यक्ति आपको चाहिए जो कि आपसे जिसको कि आप चीजें शेयर कर सके कि भी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो ये क्या गलत है क्या। सेम क्वेश्चन यू कैन आस्क। अभी मैं जनरलाइज आंसर दे सकता हूँ, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो देंगे जो आपके कनेक्ट में रहेंगे, है ना। तो इसी तरह से जो है इस्कॉन के माध्यम से ये काउंसलिंग सिस्टम भी चलता है, जिसमें कि कुछ जैसे 5 डिवोटीज या 4 डिवोटीज होंगे, उनके ऊपर एक डिवोटी होंगे और फिर उसके ऊपर भी एक होंगे, इस तरह से करके ये फिर गुरु शिष्य परंपरा की तरह से जो है काउंसलिंग चलता है। तो आपका अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको जो है और निजी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा। हाँ, बट अभी के लिए है कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि वो क्यों कर रहे हैं। कई बार होता है कि ये क्यों नहीं कर रहा है अभी से, मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये गलत कर रहा है, ऐसा भी कई बार होता है ना। तो फिर हमें भी अपने पे कॉन्टेम्पलेशन भी करना चाहिए, अपने ऊपर भी करना चाहिए। तो ये जनरलाइज्ड अभी आंसर है, बट जो एग्जैक्ट होगा वो फिर आपको आपके जिससे भी जुड़े होंगे उनसे आपको मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट अमन प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं जब से कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ा हूँ, मेरा ये हमेशा से मतलब जुड़ने से पहले मेरा जो एम था मतलब पढ़ने का, वो कुछ और था। मतलब मैं पढ़ता था, मतलब खुद के लिए पढ़ता था, अपने करियर के लिए पढ़ता था। मतलब ये सब दिमाग में रहता था कि नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कहाँ जाऊंगा, कहाँ फेंकाऊंगा मैं, मतलब यही सोचते रहता था। लेकिन जब से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया हूँ, जब से मैंने थोड़ा लेक्चर सुना है आप लोगों का, तो प्रभु जी एक बात मतलब जरूर मतलब अमोघ लीला प्रभु जी एक बात जरूर बोलते थे कि जब आप भक्ति में आते हो तब आपको और ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो उसका 2 रीजन उन्होंने बताया था कि एक तो सबसे पहले कि मतलब कि जो मायावादी लोग हैं या जो लोग हैं जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको देखते हैं, वो आपको और मतलब ऑब्जर्व करने लगेंगे बहुत ज्यादा जब भक्ति में आप आ जाओगे। और वो मतलब अब ढूंढने लगेंगे कुछ कुछ चीज जिसके वजह से वो आपको मतलब ये डिमोरलाइज कर सकें या उस चीज से हटा सकें। तो मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी कि मैं अब भक्ति में आ गया हूँ, तो मेरा मतलब प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु ने बोला कि आपका एम होना चाहिए कि आपको कृष्णा के लिए मतलब जो भी करना चाहिए आपको कृष्णा को सेंटर पे रख के करना चाहिए, या कृष्णा आपके मन में होना चाहिए, और जो भी करना चाहिए खुद के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब आपको कृष्ण के लिए करना चाहिए एज अ सर्विस। तो प्रभु जी मैं वो मोटिवेशन अपने अंदर कैसे ले आ पाऊँ, या वो मैं हमेशा खुद को कैसे ये याद दिला पाऊँ कि मैं जो कर रहा हूँ तो मैं वो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या कृष्ण मेरे गोल हैं। मतलब ऐसा क्या मैं सेट करूँ अपने दिमाग में कि मेरा माइंड कभी ये भटके ना, मतलब कुछ भी कोई भी सर्कमस्टांस से भटके ना। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर क्वेश्चन। सो इस संसार में हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। इवन आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग लाइक यू। सो हमारा स्ट्रगलिंग का लेवल अलग अलग हो सकता है, बट ऑल ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। और इस संसार में जब तक रहेंगे स्ट्रगल ही है, बिकॉज नेगेटिव वाइब्स दे आर वेरी प्रोमिनेंट। वी ऑलवेज हैव अ फाइट, वी विल ऑलवेज हैव अ फाइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको कैसे कर सके। बहुत आसान तरीका जो हमने कल भी सुना है और लगातार सुनते आए हैं, ऋषि कुमार प्रभु जी से भी सुना, कल भी सुना, वो ये है कि वी हैव टू हैव सम अकाउंटेबिलिटी टू समवन। जब तक ऊपर डर नहीं है ना, हम बड़े इंडिपेंडेंट से लगते हैं। वी हैव गिवन इंडिपेंडेंस बाय द सुप्रीम इंडिपेंडेंट पर्सन, बट वो इंडिपेंडेंस माइन्यूट है और हमेशा रहेगा हमारे साथ कि हम उस माइन्यूट इंडिपेंडेंस का क्या करें, दुरुपयोग करें, ऐसा हमेशा रहता है। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू हैव समवन whom we can accountable to। हमें अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। इसीलिए हमें एक व्यक्ति चाहिए जो हमसे क्या कर सके, हमसे पूछे या फिर हम उसको जवाब दे, जवाबदेही हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काफी सारे आंसर जो है वहीं पे ही सॉल्व हो जाते हैं। अगेन जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि
कनेक्ट, हम इस्कॉन संस्था में या फिर किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम जुड़ते हैं, चैलेंज क्या होता है कि वी आर स्टैंड आउट इन द मिड्स ऑफ सो मेनी पीपल, है ना। तो बड़ा मुश्किल होता है, किसकी सुने, सभी अच्छा ही बोल रहे हैं, गलत तो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन मेरे अंदर बदलाव तभी आएगा व्हेन आई हैव समवन whom I can personally connect to. So ये spiritual life it is all about personalism. यहाँ पे कोई impersonal चीज नहीं है, it's a personal. So we have to have someone who can be very personal to me within the devotees association. So एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके प्रति आपका fearful respect हो. So इसीलिए जो है आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति। वैसे तो ऑलरेडी जिसका कनेक्ट है तो वो ऑलरेडी असाइन करते हैं कि आप इनसे पूछिए, कि कोई भी चीज है इनसे पूछिए, कोई भी चीज इनसे पूछिए। तो ये जो आपके प्रश्न है ये बहुत ही निजी है, मतलब बहुत ही पर्सनलाइज है। इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई मे गिव एन आंसर टू यू, लेकिन हो सकता है कि वो किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो अभी यहाँ पे जो है वो पर्सनलिज्म की बात करें तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कोई डिवोटी से जिसको कि आप शेयर कर सकें। उपदेशामृत में एक श्लोका है, एक वर्स है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम याखति पृच्छति भोगते भोज्यते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। तो प्रीति के लक्षण है इसमें क्या है, क्या करता है वो सीक्रेटली जो है ही इंक्वायर है और उसको फिर वैसे ही आंसर भी मिलता है। तो वो वहां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू हैव समथिंग अकाउंटेबिलिटी टू दैट पर्सन। तो इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं हो सकता, जैसे कि आपने पूछा कि मैं क्या करना चाहिए, हाँ, तो वो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस रोज। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट है दीपान्विता माता जी, अपन म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है ना चाहते हुए भी बहुत ना चाहते हुए अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप आ जाते हैं, नहीं चाहते हुए फिर भी आ रहा है। ये सब कैसे होता है और कैसे इससे बचा जाए? मैं शायद थोड़ा समझा नहीं इसको, मैं थोड़ा सा और बताएंगे आप? ना चाहते भी क्या आता है? अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, पेन्स, रिलेशन से जो पेन्स आते हैं, रिलेशन से पेन आते हैं, इससे कैसे बचा जाए? ओके, सो ये भी थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसा बताया जाता है दैट पेन इज इनएविटेबल, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। जैसे कि बच्चा जब खेलता है ना, खेलते खेलते क्या होता है, वो गिर जाता है, गिर जा उसके फिर चोट लग जाता है, गिरता है चोट लगता है और वो फिर भी खेलता रहता है ना। और जब उसको पता लगता है कि उसकी चोट लगी है, देन ही स्टार्टेड क्राइंग। लेकिन हम जब गिरते हैं और हमारे चोट लगती है तो हम नहीं रोते हैं। इसका मतलब क्या है कि दर्द नहीं हो रहा है क्या? सो पेन इज इनएविटेबल। पेन क्या है? इनएविटेबल है। सफरिंग इज ऑप्शनल। सो ये हमारे ऊपर है कि हमें सफरिंग को जो है उसको लेके आना है अपने ऊपर या नहीं लेके आना। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में जो है भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्य तामश तितिक्षु भारत। यहाँ पे जो है जब भगवान ने अर्जुन को सेकंड चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बताया अभी कि हम जो है शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि मैं समझ गया आपने जो बताया कि ये जो सामने खड़े हैं मेरे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मेरे सगे संबंधी, ये सब आत्मा में समझ गया बिल्कुल अच्छे से, है ना। लेकिन फिर भी बचपन में इनकी गोद में खेला है, इनके संग में खेला हूँ, साथ में खाए हैं पिए हैं, वो दर्द तो मुझे हो रहा है ना, वो पेन तो होगा ना।
तो फिर जो है ये श्लोका भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। क्या बोलते हैं कि जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है, शरद के बाद ग्रीष्म आता है, तो हम क्या करते हैं, हम विचलित नहीं होते। सर्दी आएगी तो क्या करेंगे, सर्दी वाले का गरम गरम कुछ करेंगे, है ना, घर में वो लगाएंगे, हीटर लगाएंगे। और गर्मी आएगी तो फिर हम जो है उस तरह से पंखा एसी सब लगाएंगे। तो ये तब होता है जब हमारे पास ज्ञान होता है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन। तो नॉलेज इंफॉर्मेशन आता है हमारा अगेन एसोसिएशन के साथ। जब भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो धीरे धीरे जो है हमें ज्ञान आता है। क्या होता है कि जब हम एक्चुअल में पेन में होते हैं ना, उस वक्त जो है संभलना बड़ा मुश्किल है। उससे पहले तैयारी करनी पड़ेगी आपको। आपने अगर सुना हो माउंटेनियरिंग करते हैं कुछ लोग, माउंटेनियरिंग मतलब पहाड़ में चढ़ते हैं ना, वो अपने सामान लेकर के माउंटेनियरिंग करते हैं। तो माउंटेनियरिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले सारा सामान जो चाहिए पहले से जुटाते हैं। जब वो बेस में होते हैं, बेस मतलब नीचे खड़े होते हैं सारे, अभी चढ़े नहीं है, नीचे क्या चाहिए, पानी का बोतल चाहिए, वो रस्सी भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। अभी मिडिल में पहुंच के तब थोड़ी उसको ध्यान आएगा, अरे पानी का भी चाहिए था मुझे, या फिर वो रह गया। तो सारी जो आपकी तैयारी है वो पहले ही करनी पड़ती है। जैसे कोई बोलता है कि मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, तो जिस वक्त गुस्सा आएगा उस वक्त थोड़ी कंट्रोल कर सकता हो, पहले से तैयारी की होगी तभी वो कर पाएगा। कोई बोलते हैं कि गुस्से में आप मुट्ठी बंद कर लो, अरे मुट्ठी बंद करके तो और जोर से मारेगा किसी को। उसके बाद तो पहले से अगर तैयारी नहीं किया उसने, तो बहुत मुश्किल है कि उस वक्त जब पेन होगा या जब वो सिचुएशन आएगी उससे वो डील करना उसको। तो तैयारी पहले करनी पड़ेगी। और वो तैयारी पहले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम बताते हैं या हम सुनते हैं भगवद गीता से और शास्त्रों से और भक्तों के माध्यम से, कि संग में रह करके हमें क्या करना है, जो ये विश्लेषण करना है शरीर और आत्मा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये आत्मा शरीर के अंदर है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है। जब इसका विश्लेषण होता है तो हमें पता लगता है कि शरीर के लिए खाना क्या है, आत्मा के लिए खाना क्या है। शरीर के लिए खाना क्या है, रोटी सब्जी चावल ये सब खाते हैं, और ये जो आत्मा है इसके लिए खाना क्या है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। तो ये जो है हमें भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, वो हमें उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? बिकॉज दिस इज आई, दिस इज माई एंड दिस इज आई, है ना। ये मैं हूं और ये मेरा है। इट इज रिलेटेड टू मी बट इट इज नॉट मी, इट इज नॉट आई। तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, ये तब पता लगता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। तो भक्तों के संग का प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा हम भक्तों का संग करें। उसमें जो है अपना जो ये भोजन है, आत्मा के लिए जो भोजन है, क्या भोजन है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, उसको हम जो है अच्छे से ग्रहण करें। तो यानी कि सुबह उठ करके भक्तों के माध्यम, भक्तों के साथ में जो है जप करें हम। तो उससे धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो पेन है, ये तो आने ही आना है। ऐसा नहीं कि भक्त बन जाओगे तो कम हो जाएंगे, हो सकता है कि भक्त बनने से ज्यादा आएंगे। क्योंकि भक्त बनना मतलब यू आर फाइटिंग टुवर्ड्स माया। ये पूरा संसार माया का है, वो उसका अधिकार है माया का यहाँ पे रहना। बट यू आर नॉट कमिंग इन द ट्रैप ऑफ दिस माया। इसका मतलब आप विद्रोह कर रहे हैं ना, तो भक्त के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, उसके लिए ज्यादा कठिनाई आएगा। बट सफरिंग इज ऑप्शनल। और ऐसा नहीं कि प्रभु जी अच्छा तो क्या हम सहते रहें क्या? नहीं, यू विल हैव दैट इम्यून सिस्टम। जब आप भगवान पवित्र नाम को उच्चारण करेंगे, उससे हमारे इर्द गिर्द क्या होगा, एक शेल्टर बनता है, एक शील्ड बनता है, दैट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉट बीइंग suffered by the pain. Pain will come. तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। कोई बोलते हैं कि पास्ट लाइफ से आती है पेन्स, जो रिलेशनशिप पास्ट लाइफ से पेन आती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो ये देखो कर्मों का जो है जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस कारण से आया होगा। इवन भीष्म पितामह जब काफी सारे जो तीर लगे, तो ही वाज लाइक, मैंने अपने पूरे 100 साल देख लिए, 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण मुझे ऐसा होना चाहिए था। तो फिर भगवान कृष्ण थे, उनसे पूछते हैं तो फिर बताते हैं तो उससे एक पहले और देखो आप। तो क्या हुआ था, यू आर द किंग और भी राजकुमार,
एंड यू वेंट फॉर हंटिंग, तो आप हंटिंग के लिए गए थे, रथ से जा रहे थे तो देखा सामने सांप है, रथ रोक दिया आपने, रथ रोक दिया और उठाया अपने बाण से, क्या किया, उस सांप को फेंक दिया। तो कहते फिर क्या गलत है इसमें? आपने अच्छा किया, लेकिन आपके वो क्या है, संरक्षण में था, तो आपको देखना चाहिए था कि वो सुरक्षित रहे। आपने फेंक तो दिया, लेकिन कहाँ गया पता नहीं लगा आपको, और वो कहाँ गिरा, एक कंटीली झाड़ियों के ऊपर गिरा, जिसमें कि उसका पूरा शरीर पियर्स हो गया कांटों से। सो कर्मों का तो हम बहुत मुश्किल है उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन की किस तरह से हुआ होगा, बट सर्टेनली देयर आर द कर्मस व्हिच ब्रिंग्स ऑल दिस हैप्पीनेस डिस्ट्रेस। लेकिन जिस तरह से हम बताया था प्रभु जी ने कल भी, जिस तरह से हम खुशी के लिए, सॉरी, दुख के लिए जो है प्रयत्न नहीं करते हैं, बट दुख का आते हैं, उसी तरह से जो है खुशी भी आता है। सो दीज आर दी लाइक अ मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण, जिस तरह सर्दी जाती है गर्मी आती है, उस तरह से सीजनल चेंजेस रहते हैं। सो दिस आर देयर, ये पिंच कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें शील्ड बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो हरि नाम है उसको अच्छे से लेने का प्रयास करना है, ठीक है, भक्तों के संग में। प्रभु जी मेरा प्रभु जी और एक क्वेश्चन हरे था। कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी टू इंटरप्ट माता जी, एक्चुअली हमारा समय हो गया है, इट्स ऑलरेडी 7:48। सो वी वुड लाइक टू, आप सबका क्वेश्चन हम लेंगे, प्लीज डोंट वरी, आप सबका क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है, जिसका भी अभी नहीं लिया गया, नेक्स्ट वीक वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, ओके। सो हिज ग्रेस माधव मुरारी प्रभु जी हैज जॉइंड and now our session will start on Krishna consciousness in Russia. So let me first introduce Prabhuji. Let me have a pleasure to introduce Prabhuji, then we'll go with session. So His Grace Madhav Murari Prabhuji is worldwide preacher, and he's associated with iskcon Moscow. So let's welcome first His Grace Madhav Murari Prabhuji by loud chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So His Grace Madhav Murari Prabhuji is a dear disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, who is a ISKCON Guru, GBC and BBT trustee. His Grace Madhav Murari Prabhuji, his legal name is Mikhail Meshanin, and he is from Russia. He has got higher education in law from Saratov Law Academy in 2005. He joined ISKCON in 2006 to help the humanity and world at large by spreading the message of Bhagavad Gita all over the world. He is the part of many preaching activities all over the world and conducts many educational seminars and programs. He does the translation services of Indian ancient scriptures there. So जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज रशिया में इतना प्रचार हो रहा है, तो रशियन भक्त हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं, जिन्होंने, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, they don't know Hindi, they don't know English, but a devotee like Madhav Murari Prabhu ji, they are translating our ancient scriptures in Russia, so that in Russian language, so that they can be benefited, Russian people, okay. And at present he is in Yaroslavl, Russia. He is now preaching in Golden Ring area. So let's again chant Mahamant for His Grace Madhav Murari Prabhu ji and welcome him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Prabhu ji will speak in English. Prabhu ji English में बोलेंगे और I will be translating in Hindi. मैं उसको हिंदी में translate करूंगा, but not word to word. I will try to translate the summary. What Prabhu ji will say, I will speak a summary of that. Okay, right? So welcome His Grace Madhav Murari Prabhu ji. Thank you. Hare Krishna, nice to see all of you. Hare Krishna, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देखकर. I prepared some slides for you to show, to see, that you could see the photos, how Russian ISKCON was developing. मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे रशिया में जो ISKCON है वो डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है. We will be speaking how Srila Prabhupada visited Moscow in 1971 and what happened after this. 1971 में मॉस्को, उसके बाद क्या हुआ मॉस्को में?
So Srila Prabhupada visited Moscow in 1971, and we will be speaking what happened after this. Srila Prabhupada जो है वो बता रहे हैं, right? Srila Prabhupada is speaking, right? Okay. Okay, but before this, we will read from Srimad Bhagavatam. Venugopal Charan, if you have Srimad Bhagavatam in Hindi, then we can read a little bit from the purport to this verse, Srimad Bhagavatam 4, 30, 37. Maybe you have this verse on your mobile. Do you have it? Yes, we just. Okay, very good. तो हम श्रीमद् भागवतम 4.30.37 से पढ़ेंगे. Yes, yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam 4:30-37. Tesham vicharatam padbhyam tirthanam pavanechkaya bhitasya kimna rocheta tava kanam samagamaha. Translation: Dear Lord, your personal associates, devotees, wander all over the world to purify even the holy places of pilgrimage. Is not such activity pleasing to those who are actually afraid of material existence? Are you ready to read the Hindi translation? I need 1 minute, Prabhuji. I'm just opening. Okay, 4:30-37. Here in this verse, we read that there is a special category of devotees who are preachers, and they are very dear to Supreme Lord. Translate. Sorry, Prabhuji, I was busy in this. Translate. Okay, so I'm just Translate. okay, I'm just translating the from here only. Then it's opening there. Okay, so dear Lord, your personal associate devotees wander. प्रिय भगवान, आपके जो पार्षद हैं, आपके जो वो पूरे विश्व में घूमते हैं और सब जगह को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, होली प्लेसेस को. Is not such activity pleasing to those who are actually afraid of material existence? तो क्या ये जो एक्टिविटी है, ये जो material existence से जो afraid, is not such activity pleasing to those who are is not such activity pleasing to those who are actually afraid of material existence? हाँ, तो जो material भौतिक जो भौतिकतावादी लोग हैं. Okay, Prabhuji, it's open now. I will read the exact translation. Okay, very good. Very good. Let's do it. 4.30.7, right? 4.30.37. Yes. So please read the translation. Hare Krishna. हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं, जो इस संसार से भयभीत हैं. क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? Okay. Now we'll read from the purport, and I will show you. Venugopal Prabhu, you just read this in Hindi that is in blue. Okay, this part. Please find this translation of the purport and read it in Hindi. Yes, yes. Right. So, भक्त दो प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजनानंदी. भजनानंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं नहीं जाते. ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं. वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी-कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं. गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं. वे सारे संसार तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं. And another part of this purport, this one at the end, this one. तो अतः वह जिस किसी स्थान में अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है. यस, अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कल्मश से छुटकारा पा सके. प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है. Okay.
Oma Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshur Unmilitam Yana, Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manох Pishtam, Stapitam Yena Bhutale, Svairupa Kadama Ayam Dadati Svapadantikam. Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So those who are Goshthanandis, those who are preachers, they are very dear to Supreme Lord Shri Krishna. तो जो प्रचारक हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं. Srila Prabhupada is one of them. श्रील प्रभुपाद उनमें से एक हैं. He is Shaktivesh Avatar. Shaktivesh Avatar means person who was sent by Supreme Lord directly to this world exactly to distribute this spiritual knowledge. श्रील प्रभुपाद जी शक्त्यावेश अवतार हैं, जो कि भगवान द्वारा भेजे गए हैं इस जगत में इस भक्ति का प्रचार करने के लिए. And we have one moment. I will close this and I will open this again. And we have one very useful website which is called vanipedia.org. Here we can find a lot of interesting information regarding Srila Prabhupada's life. तो ये वानीपीडिया जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसमें हम श्रील प्रभुपाद के जीवन से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देख सकते हैं. So here in June of 1971, in June, Srila Prabhupada visited Moscow. Here we can find this information. From June 20 to June 26, he was in Moscow. तो 20 जून से 26 जून तक श्रील प्रभुपाद जी मॉस्को में थे. हम देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट में. So just for a few days he was in Moscow, and we will be speaking what was the result of this short visit. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर थे और उन्होंने बताया कि वो क्यों इस थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं. And the result was Srila Prabhupada later on, when this visit finished, he wrote a letter to his disciple Tamal Krishna. And here, Venugopal Charan Prabhu, you can see this in English. It will be easier for you to translate, right? So here, Srila Prabhupada writes from Moscow to Tamal Krishna. He writes, we talked with one big professor, Mr. Kotovsky, and Shema Sundara talked with many great writers and musicians. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लेटर लिख रहे हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि हमने जो है बहुत बड़े एक प्रोफेसर हैं मिस्टर कोटोव्स्की और हमने उनसे बात की और श्याम सुंदर जो हैं उन्होंने बहुत बड़े राइटर्स और म्यूजिशियंस से बात की. Two boys are working with us, one Indian and one Russian. दो लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक इंडियन है भारतीय और एक है रशियन. So there is a good prospect for opening a center, although the atmosphere is not very good. The embassy was no help. हालांकि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा है हम यहाँ पर जो है एक सेंटर खोलें. तो एम्बेसी हमारी मदद नहीं कर रही है. So our visit to Moscow was not so successful, but for the future it is hopeful. तो हम मॉस्को आए लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन भविष्य में ये जरूर कामयाब होगा. Actually, Srila Prabhupada wanted to speak with Soviet government. He wanted to preach Krishna consciousness to Soviet government, and he asked Professor Kotovsky, Mr. Kotovsky, to help him to arrange this meeting, but Kotovsky refused because all these religious issues were strictly prohibited in USSR. तो प्रभुपाद जी जो है रशियन जो सोवियत गवर्नमेंट है उनसे बात करना चाहते थे, तो उन्होंने प्रोफेसर कोटोव्स्की को संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि रशिया में जो है बहुत सख्त कानून थे, मतलब वहां दूसरे धर्म का प्रचार नहीं कर सकते. But anyway, he didn't lose hope, and during these 5 days he was able to do something. लेकिन प्रभुपाद जी ने कब आशा नहीं छोड़ी कि लेकिन आगे के समय में कुछ ना कुछ होगा. And we will also look on some photos from this 1971. Here you can see Srila Prabhupada and
where he is. He is on the red square. It is the center of Moscow, and this building is called Saint Basil Cathedral. Saint Basil Cathedral. Saint Basil Temple. Saint Basil Mandir. ओके, तो सेंट ब्राजील मंदिर है, सेंट रे रशिया मॉस्को का सेंटर है, वहां पे प्रभुपाद जी का ये फोटो है जो हम देख रहे हैं. Not Saint Brazil, Saint Basil. Basil, it is male name. Brazil, it is country. Okay, Basil. Yeah, okay, good. Okay, so here you can see also the same picture. I chose this picture as this virtual background here for our broadcasting. This picture. हम ये फोटो देख सकते हैं पीछे, ये जो बहुत ही सुंदर दृश्य है. So this cathedral or this mandir is situated in the center of Russia, nearby on the Red Square area. Red Square area में रशिया के सेंटर में ये मंदिर स्थित है. So here we can watch some pictures. The same Saint Basil Cathedral, and here we can see Srila Prabhupada and his personal servant Shyamasundara Prabhu, or maybe Aravindaksha Prabhu. He traveled to Moscow with two servants. One was Shyamasundara Das, another was Aravindaksha Das. तो ये वही जगह है जो हमने अभी जिसके बारे में चर्चा की, और ये प्रभुपाद जी दो सर्वेंट्स के साथ गए थे अपने. एक श्याम सुंदर प्रभु थे, एंड द सेकंड नेम प्रभु जी Aravindaksha. Hare Krishna. Okay, let's go to the next picture, to the next photo. We can see also this red square. It is also red square, and in the right corner you can see, here you can see this building. It is Lenin Mausoleum, and here the dead body of Vladimir Lenin is lying. Is kept. The dead body of Vladimir Lenin, who created USSR. This dead body is kept in this building, this mausoleum. Okay, जो आप देख रहे हैं राइट में, ये म्यूजियम है. यहाँ पे डेड बॉडी यूएसएसआर के नाम प्रभु जी ने अभी बताया, वो उनका डेड बॉडी यहाँ पर है. Okay, so we go further. Here, Srila Prabhupada, he is in his hotel. The name of hotel is Nacional, and he was looking around, and he was thinking how to distribute, how to spread Krishna consciousness in this country. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक होटल में हैं, जिसका नाम प्रभु जी ने अभी बताया. यहाँ पर प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि कैसे हम इस कृष्ण भावना में को पूरे रशिया में हम फैलाएं. Okay, let's go to the next picture. The next picture here, it is bus station, and he is walking here, and local people from Moscow, Soviet people, are also nearby. You can translate. Okay, ये बस स्टैंड है वहाँ का, और यहाँ पे लोकल जो है आप देख सकते हैं, लोकल जो सोवियत के जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं. And it was surprising, but in 2011, when we were celebrating the jubilee of coming Srila Prabhupada to Moscow, there was one Mataji. One Mataji told that she personally saw Srila Prabhupada in Moscow in 1971, and after some years she was able to get Bhagavad Gita as it is. तो एक माता जी हैं, जब हम 2011 में गोल्डन जुबली मना रहे थे, जो प्रभुपाद जी रशिया में गए थे, तो एक माता जी हैं, उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा था और बाद में फिर उनको श्रीमद् भगवत गीता मिली. So here somewhere there is his okay, and this is gates. This is gates to Eastern Studies Institute, where Srila Prabhupada was speaking with Professor Kotovsky. Eastern Study Institute का गेट है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर कोटोव्स्की जो थे, उनसे श्रील प्रभुपाद जी ने बात की थी. Going further, the next picture. And it is also, we have seen the gates to this institute. It is the door, and it is the door
to the same institute. तो Or ये the जब same मैंने अभी institute. तो अभी हमने Yeah. गेट देखा इंस्टीट्यूट का, और यही उसी इंस्टीट्यूट का अंदर फिर एक और दरवाजा है ये दूसरा. Okay, what we have more? The same cathedral, the same mandir, and also Srila Prabhupada is thinking how to spread Krishna consciousness in Russia. तो ये कैथेड्रल है, वही मंदिर. यहाँ पर प्रभुपाद जी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत को हम रशिया में फैलाएं. Okay. And this is Tverskaya Street. Tverskaya Street. ये फेरस्काई स्ट्रीट है. Yes, Tverskaya Street. So this street is exactly between hotel where Srila Prabhupada was staying and Red Square, where this Saint Basil Cathedral, you can see it in the center of the picture, is situated, and Red Square and everything. It means that Srila Prabhupada was invited by Professor Kotovsky to Moscow, and Srila Prabhupada, the best place in Moscow, the center of Moscow was given to Srila Prabhupada in order that he could be accommodated there for 5 days. तो कोटोव्स्की जो प्रोफेसर है, उन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी को बुलाया था. ये आप देख सकते हैं, ये वही कैथेड्रल और जो होटल था वहां के मध्य में है श्रीला प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी को बेस्ट एकोमोडेशन दिया गया था वहां पर, सबसे अच्छा रहने के लिए, जहां 5 दिन प्रभुपाद जी रुके थे. So it is the center of Russia, the center of Moscow, and this Moscow is the center of the capital city of Russia, and it was center of Moscow. Okay, then we are going. Yeah, thank you. And now we will be speaking about Ananta Shanti Prabhu. You can see Ananta Shanti Prabhu here on this picture. अब हम अनंत शांति प्रभु जी के बारे में बात करेंगे. आप देख सकते हैं फोटो अनंत शांति प्रभु जी का. So his ordinary name or official name or karmic name, as we say, is Anatoly Fedorovich Penyaev. You can see this on the screen. Anatoly Fedorovich Penyaev. अनुवादक. अनुवादक. प्रभु जी का जो कार्मिक नाम है आप देख सकते हैं, अनातोली फेडोरोविच पिंये. मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं. Your pronunciation is okay. And okay. Fedorovich, it is patronymic. It means that his father's name is Fyodor. Okay. तो फेडोरोविच ये जो है, ये प्रभु जी के फादर का नाम है जो आगे लगा है नाम के साथ, पिताजी का. Yes, Pitajika. Okay, so here it is interview, and Prabhu, it will be really quite easy for you to translate because you can see this on the screen, right? I started preaching Krishna consciousness after Srila Prabhupada visited Moscow in 1971. Gradually, people in the Soviet Union became more and more attracted to Krishna consciousness, and it became quite widespread. The authorities, however, became afraid because so many of the intelligentsia were interested in Krishna consciousness. Everything spiritual was considered to be criminal, and thus they started repressions. तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसमें बता रहे हैं कि मैंने जो है प्रभुपाद जी के आगमन के बाद 1971 के बाद कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और धीरे धीरे सोवियत यूनियन के लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत से आकर्षित होने लगे और ये फैलने लगा. लेकिन जो वहाँ की अथॉरिटी थी, जो वहाँ के गवर्नमेंट थी, वो इससे डर गए, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ज्यादा लोग जो है इस कृष्ण भावनामृत में इंटरेस्ट लेने लगे, अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे. तो वहां पर क्या था कि अगर हम करते हैं स्पिरिचुअल धार्मिक कुछ भी करते हैं हम अगर, तो उसको जो है क्राइम माना जाता था, ठीक है, जुर्म माना जाता था. तो उन्होंने फिर उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया. Okay, let's read further. It was just like an explosion of Krishna consciousness in the Soviet Union. The authorities were terrified, so they tried to discredit the movement and present it as simply a group of crazy criminals. Yeah, crazy criminals, because I was the first one to preach and the only disciple of Srila Prabhupada. They tried to repress me and present me as a crazy criminal. The court accused my god brothers and me of teaching vegetarianism, which they said is harmful to the body, and for teaching mantras and praying, which they said is harmful for a person's mental condition. On this ridiculous pretext, they were accusing us. तो वहां पर जो है कृष्ण भावनामृत का विस्फोट होने लगा सोवियत यूनियन में.
तो वहां की जो अथॉरिटी थी, जो वो इतनी डर गई कि उन्होंने जो है इस मूवमेंट के लोगों को, जो कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े थे, उनको जुर्म, मतलब एक बोला जाए क्रिमिनल बोला जाने लगा, क्राइम जैसे जो जुर्मी कहते हैं। तो क्योंकि मैं पहला व्यक्ति था जो वहां पर प्रचार कर रहा था और श्रीला प्रभुपाद का अकेला मैं जो डिसाइपल था, प्रभुपाद जी का शिष्य था, तो उन्होंने मुझे पकड़ के और क्रेजी क्रिमिनल मुझे घोषित कर दिया। क्रेजी क्रिमिनल मतलब कि पागल, जो पागल होता है, जो क्राइम करता है, कह दी। ओके, द कोर्ट एक्यूज माय गॉड ब्रदर्स एंड मी ऑफ, तो कोर्ट ने जो है किस लिए, किस क्या मतलब बुनियाद रखा उन्होंने कि हम जो है वेजिटेरियन मतलब कि जो है ये सात्विक जो भोजन है उसका हम प्रचार कर रहे हैं, तो वो शरीर के लिए जो है अच्छा नहीं है, हानिकारक है। और हम जो मंत्र बोल रहे हैं, और ये जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र हम जो बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है ये ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजों पे हमें जो है एक्यूज किया जाने लगा। So according to the criminal law of those times, we had at least 2 articles in our according to our criminal law, and one article, one activity that what was considered to be a crime is to teach vegetarianism, means to do harm for people's health. तो वहाँ की क्रिमिनल लॉ It was punishable. It was punishable. तो क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर आप वहां पर ये जो है इसका प्रचार कर रहे हैं, सात्विक भोजन मतलब मांसाहार ना खाएं, सिर्फ वेजिटेरियन बने रहें, तो उसके हिसाब से वहां पर वो बहुत बड़ा जुर्म था। आप पीपल जो मतलब वहां के लोग हैं उनके हानि पहुंचा रहे हैं, उनके हेल्थ को आप हानि पहुंचा रहे हैं, और ये जो है पनिशेबल है, मतलब कि इसकी सजा दी जानी चाहिए। And another activity that was considered to be a crime is not to work anywhere, means not to be an employee, not to work on, for example, on factory or some. You understand what I'm speaking about, right? Not to be an employee. It was also punishable, because every Soviet person had to work somewhere, had to work for Communist Party benefit, for bright future. Okay, so it is punishable for whom, Prabhuji? For those who were not working somewhere, were not working officially. वहां पे अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं कुछ, तो फिर ये पनिशेबल था ये भी। Yes. Okay, so what we have here, Anantashanti Prabhu, or Anatoly Fedorovich Penyaev, he was the first disciple of Srila Prabhupada, first Russian disciple, and first Soviet disciple, Srila Prabhupada's disciple. तो अनंत शांति प्रभु जी श्रील प्रभुपाद के पहले रशियन सोवियत डिसाइपल शिष्य थे। So he was kept in mental houses from 1982 until 1987. He was kept against his will, of course. He was kept in mental houses, and all these drugs were used in order to, in order to ruin his mental state, mental health. 1982 से 1987 तक आनंद शांति प्रभु जी को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और उनको ड्रग्स दिया जा रहा था ताकि वो अपना मानसिक शक्ति जो है वो खो बैठे। But anyway, his mental health was saved by Krishna's mercy. लेकिन भगवान कृष्ण की दया से उनका जो मेंटल स्टेट था, मानसिक स्थिति, वो बिल्कुल ठीक रही। Why? Because he was always chanting, always when it was possible, he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। They were trying to ruin his consciousness, but lying down under his Kamble, he was always chanting Mahamantra. तो वो उनकी मानसिक स्थिति को खराब करना चाहते थे, उनके कॉन्शियसनेस को, लेकिन प्रभु अनंत शांति प्रभु हमेशा जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे।
Okay, so let's go further. Here we have some statistics, and according to these statistics, it is January the 1st of 2015. According to this statistics, we have by this moment we have 76 Krishna 76 iskcon centers registered in Russia. 76. तो ये जो हम गणना देख रहे हैं ये 2005 की गणना है। उस समय 76 जो हमारे हरे कृष्णा के सेंटर जो है वहां पर रजिस्टर्ड हो चुके थे। Okay, so they allowed us to be officially registered since 1988. 1988 के बाद से जो है वहां पे ऑफिशियली जो है इसको रजिस्टर करने दिया जा रहा था इस्कॉन को। Okay, so we have 76 iskcon centers, and we have some iskcon offices. To iskcon offices, generally it is 78 according to this chart, according to this information. Prabhuji, 78 offices? No, not offices. 76 iskcon centers and 2 iskcon offices, official organizations, in order to deal with how to say secular organizations. You understand? Yeah. So 76 जो है सेंटर थे और 2 इस्कॉन के ऑफिस थे। Okay, now we will be looking on some photos. So this is book exhibition. It took place maybe in 1976 or 1978, something like this. ये बुक एग्जीबिशन है जो हम तस्वीर देख रहे हैं 1978 का है प्रोजेक्ट। 1978 राइट प्रोजेक्ट? 78 or 76. I'm not sure. 1976 या 1978 के बीच का है। Yes. Okay, and His Holiness Gopala Krishna Goswami, he came in United States of America, Soviet Union. He came to Soviet Union in 1976, and he was personally present here. You can see on these photos. It is how Bhaktivedanta Book Trust was participating on this book exhibition. तो इस बुक एग्जीबिशन में हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी उपस्थित थे। 1976 की बात है ये, और इस बुक एग्जीबिशन में इसी भक्तिवेदांत स्वामी के भी जो बुक्स थे उनको लगाया गया था, उनको दिखाया गया था। Okay, so you will see the first Soviet devotees here on these photos. It is you can see the first Namahatas here, the first Namahatas. ये हमारे आरंभ के कुछ भक्त हैं जो हम देख रहे हैं नामहट सेंटर के। And these photos were made in the beginning of 80s. Beginning of 80s. 80. 80, ओके, तो ये 80s का, ओके सॉरी, इट इज 80s, सन 1980 के आसपास का है। The first Namahatas, you can see all these devotees, all these people are really sincere, and Krishna is between them. The atmosphere is quite spiritual here, right? आप देख सकते हैं ये भक्त जो है कितने सिंसियर हैं, कृष्ण जो है बिल्कुल सेंटर में है इनके मध्य। So maybe in 1982 all these repressions were started. Before 1982 there were no repressions. 1982 में जो है ये शुरू हुआ था रिप्रेशन, उससे पहले नहीं हो रहा था। So maybe about 5 or 6 years all these repressions were going on, but in 1987, 1988, all this violence has stopped
by mercy of Krishna. 5-6 वर्षों तक ये जो रिप्रेशन चला था, ये जो दबाया जा रहा था कृष्णानमित आंदोलन को, और 1987 के आसपास ये बंद हो गया था. Okay, the first Harinamas you can also see here, all these Harinamas, and what is written here? It is written here, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पहला हरे कृष्णा संकीर्तन है, आप देख सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है सामने. Let's see what we have more. And, okay, Harinamas. Well, if you wish, I can send you this PDF file also, if some of you want. अगर आप लोग चाहते हैं ये सब पिक्चर्स, तो प्रभु जी आप लोगों को ये सारी ये PDF फाइल भेज देंगे, सारी फोटोज. Yes, if you want, if you need, if you want. Okay, so this is book distribution. ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तकों का वितरण हो रहा है यहाँ पर. And okay, it is another story. Okay, what should I show you now? Oh, I will show you one very interesting thing. मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ. Yes, it is the first pilgrimage of Soviet devotees, the first pilgrimage to India, to Vrindavan, to maybe to Mayapur. I'm not sure about Mayapur. To Vrindavan, it is for sure. तो ये सोवियत जो वहाँ के भक्त थे, उनका पहली धाम यात्रा है वृंदावन की. Yeah, as you can see in this on this picture here, it is Krishna Balaram Mandir. It is Krishna Balaram Mandir. So they were in this temple. आप देख सकते हैं कृष्ण बलराम मंदिर है, तीसरा जो हमें दिख रहा है फोटो. So let's see, and here on these posters we can read, "Welcome to the devotees from USSR," or for example we can read here, "The Soviet Hare Krishnas, thank you Gorbachev, thank you, Glasnost." यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टर पे, बैनर पे लिखा हुआ है कि जो यूएसएसआर से जो भक्त आए हैं उनका स्वागत है, द सोवियत हरे कृष्णा, थैंक यू. And what does it mean, Glasnost? Glasnost means publicity. Russian, प्रचार. Not prachar. Publicity means prachar in Hindi, right? I think maybe. So you see, it is written here on this poster, "Thank you, Gorbachev." Gorbachev is the surname of the Soviet leader who was in charge of Soviet Union at these years. "Thank you, Gorbachev. Thank you, Glasnost." Glasnost, it means publicity, because when Gorbachev came and when he was ruling in USSR, he changed drastically. He changed the politics of USSR, and he allowed many things. He allowed people to express their opinions only, because before him, if people were too much open in expressing their thoughts, they could be punished for this. But when Gorbachev came, the politics were changed, and people were feeling themselves more free. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो थैंक यू, धन्यवाद कर रहे हैं गोर्बाचोव का, जो कि बाद में जब आए उन्होंने काफी जो है उसको लीनियंट कर दिया. जैसे चीजें वहां पे बहुत खराब थी, तो उन्होंने काफी चीजों के लिए आज्ञा दे दी थी. हमारा जो प्रचार जो कृष्ण का ये चल रहा था, कृष्णानमित का. So here it is written, "Thank you Gorbachev, thank you Glasnost." It means thank you publicity, thank you the politics of publicity, which allows people now to become more free in their minds, to become more free in the sense that now they can travel to another country, for example, to India, to do this pilgrimage, because before that it was quite difficult for Soviet people to travel anywhere except their own beloved USSR.
वहां पर पहले सोवियत के जो लोग थे उनको आज्ञा नहीं थी दूसरे जगह ट्रेवल करने की, दूसरे देश में, लेकिन जो गॉर्बेचोव और एक और नाम प्रभु जी ने जो बताया, वो उनको थैंक बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इन सब की आज्ञा दे दी। द सेकंड नेम प्रभु जी, Yes. गॉर्बेचोव Second name. It is not the name. It is term. Glasnost. Glasnost means publicity. Okay. Publicity. Right. It means publicity. Okay. Okay. So it is what? It is the same pilgrimage. So you also can see this, the Soviet Hare Krishna devotees. Thank you, Gorbachev. Thank you, Glasnost, and so on. And long live Soviet-Indian friendship, right? You can see this on the screen. So many interesting photos. See, it looks like Mayapur. Maybe it is Mayapur. Don't you know? Is it Mayapur or not? मायापुर जैसा लग रहा है, क्या ये मायापुर है? आप लोग जानते हैं? Maybe Mayapur, maybe not. I'm not sure. Okay. Anyway, so these photos are also quite unique because here we can see how the first Soviet devotees were taking initiation in holy name Harinama Diksha and Gayatri Diksha also. यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो सोवियत के जो भक्त हैं उनको हरिनाम दीक्षा और गायत्री दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा दोनों मिल रही है। Okay, very good. And also I will show you one thing here. Let's see. So before all these repressions were stopped, one devotee, his name is Prahlad. He was accompanying His Holiness Indradyumna Swami in his preaching programs. And Prahlad Prabhu, he was born, I think he is from Australia. So he decided to convince Gorbachev to stop these repressions. तो जो प्रहलाद प्रभु जी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन हैं, उन्हें इंद्रदीन स्वामी महाराज का संग मिला था, और दमन जो चल रहा था ये, उससे पहले उन्होंने गॉर्बेचोव से रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि ये दमन कार्य को रोक दिया जाए। So you can see here these photos, like different devotees from different countries, they keep these posters, and on these posters it is written, free the Soviet Hare Krishnas. ये अलग-अलग देश के अलग-अलग प्रांत के भक्त हैं, आप लोग देख रहे हैं, और ये मांग कर रहे हैं, आप पोस्टर में देख सकते हैं कि जो सोवियत के जो भक्त हैं उनको आजाद किया जाए मिस्टर गॉर्बेचोव से। Yes. Here it is written, Mr. Gorbachev, please let our friends go. And actually, Prahlad Prabhu, he recorded song. You can find this song on YouTube if you like. When Prahlad Prabhu, maybe he was 6 years old or 7 years old, he was chanting this song, addressing to Mr. Gorbachev, that please help my friend go, let my people go, let my friends go, please make Hare Krishnas free. तो यहाँ पे जो प्रहलाद प्रभु हैं वो 6-7 वर्ष के हैं, और मिस्टर गॉर्बेचोव से वो आग्रह कर रहे हैं एक संगीत द्वारा, उन्होंने एक गीत लिखा जिसमें वो आग्रह कर रहे हैं कि जो सोवियत के जो भक्त हैं उनको आजाद कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। And here the upper photo on the right side, you can see all these children. It was musical group led by Prahlad, and they were chanting this song together. तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं आखिरी में, ये म्यूजिकल ग्रुप है जिन्होंने प्रहलाद प्रभु ने जिसको लीड किया था और संगीत जो है उसको गाया था। So finally, Mr. Gorbachev, he decided to help us and to stop all these repressions. And since 1988, it was allowed for iskcon centers to be registered officially in Russia, not in Russia, but still in Soviet Union. अंततः गॉर्बेचोव जी ने इसको सुना और उन्होंने 1988 में इसकी आज्ञा दे दी सोवियत में हरे कृष्णा सेंटर इस्कॉन की स्थापना के लिए। Of course, it is quite difficult to
to tell all the history of the Soviet iskcon and Russian iskcon in our short presentation. कम समय में हम पूरा सोवियत इस्कॉन और रशियन इस्कॉन को हम नहीं दिखा सकते हैं. One devotee, by the way, he is Gopala Krishna Goswami's disciple. He wrote a book, Hare Krishna in USSR, and this book is like this, about how many? About 800 pages or 850 pages. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के एक शिष्य हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि बहुत ही मोटी है, लगभग 800 से 850 पन्नों की. Because if we will ask, we can ask any of those devotees who were pioneers of the Hare Krishna movement in USSR, and each and every person from those from this period of time, those who were witnessing what was happening, any person, he or she can tell a lot of different stories. तो उस समय जो वहां पे भक्त के लोग मौजूद थे, उन्होंने एक एक घटना देखी है और हर कोई जो है अलग अलग घटनाओं को बता सकता है. Okay. Anyway, we are going to the next slides. Here we have what we have. I will show you picture. First of all, I will show you picture of our official Moscow deities. जो ऑफिशियल जो मॉस्को के जो विग्रह हैं, उनके दर्शन आप कर रहे हैं. So their names are Shri Shri Doyal Nitai Shachisuta. श्री दयाल निताई सची सूता इनके नाम है. So we are worshiping these deities for many years in Moscow. कई वर्षों से हम मॉस्को में इन विग्रहों की सेवा कर रहे हैं. They are the center of Moscow community. मॉस्को जो कम्युनिटी है, वहां का जो ये मध्य है, मतलब सेंटर. And also, if we would be able to speak with them directly, if we would have this divine spiritual ability, also these deities would tell us many different stories that they know about Soviet iskcon and Russian iskcon. तो अगर हमारे अंदर डिवाइन ट्रांसेंडेंटल वो शक्ति आ जाए, तो हम इन डीटी से, इन विग्रहों से भी पूछ सकते हैं और ये भी हमें कहानियां बता सकते हैं सोवियत और जो इस्कॉन रशिया है, रशियन इस्कॉन है, उनके बारे में. Okay, now I will show you how the social service goes in Russia. How? Social service. Social service means how we help society, food for life, and so on. अभी हम दिखाएंगे कि कैसे सामाजिक जो कार्य है, सामाजिक सेवा वो कर रहा है रशिया में इस्कॉन. So it is called food for life. Food for life. We are trying to distribute prasadam. Prasadam means sanctified food, food that was offered to Lord Krishna himself. We are trying to distribute this food to different people who can, for example, be poverty stricken. And for example, this food distribution can take place where the war is going on, or something like war is going on, or people they are in need, they have to eat something, but food is not available, so Hare Krishna devotees, they help these people. तो ये हम प्रसाद का वितरण करते हैं वहां पर रशिया में अलग अलग लोगों को, और खासकर अगर जैसे कहीं लड़ाई होती है तो वहां पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो हरे कृष्णा के भक्त हैं, वो वहां पर जाकर उनको प्रसाद देते हैं, जो कि भगवान को पहले ऑफर किया जाता है, भोग लगाया जाता है. Let's go to the next group of slides. So here you can see these old people, and we have devotees who are taking care of old people in the sense that they distribute prasadam to them, and also they take care of them to the extent that is possible in their situation.
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको जो है हरे कृष्णा के भक्त जो है वो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर वृद्धाश्रम होता है वैसे ही वहां पे उनको प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और जो भी सेवा उनकी कर सकते हैं वो करते हैं भक्त लोग। Okay, let's go further. The same story. People are grateful to iskcon devotees that they distribute prasadam. वहाँ के लोग बहुत कृतज्ञ होते हैं जब इस्कॉन के भक्त वहां पर प्रसाद का वितरण करते हैं। And not only to how to say also when the city, when Moscow, when they arrange some programs in the city, big programs, we also try to participate in these programs and to do our little humble contribution. And for example, there can be such program like the city day. City day. Are you getting the point? City day, the day of this particular city. And if this city day is celebrated, then we also can take part and distribute prasadam in order to benefit people. तो जो वहां पर बड़े बड़े जब भी इवेंट कार्यक्रम होते हैं वहां पर जो लोग करवाते हैं उसमें भी जो है इस्कॉन के भक्त पार्टिसिपेट करते हैं। उनका जो कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं उसमें, और एक प्रभु जी ने जो नाम बताया एक खास जो कार्यक्रम होता है उसमें भी वो लोग भाग लेते हैं इस्कॉन के भक्त। Let's go to the next picture. The same story, and here you can see our Food for Life in Charge, Nirmal Kanti Prabhu. These two pictures. He is our representative in city administration. जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये फूड फॉर लाइफ के जो है वहाँ के हेड हैं निमाई कांत प्रभु, राइट? No, Nirmal Kanti. निर्मल कांति प्रभु जी। Yeah. So he is our representative in the city administration. Where? City administration, Moscow administration of the city. तो वहाँ पे प्रभु जी ही उसको प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है मॉस्को का। Okay, good. Well, also taking part in some celebrations here, and it is what it is. Seems to be it is orphan house. So we're trying to help them also by distributing prasadam and giving some gifts. ये अनाथालय है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अनाथ बच्चों को भी प्रसाद वितरण करने का हम प्रयास करते हैं। Okay, let's go further. It is our Sadhu Sangha festival. Sadhu Sangha festival. It is Sadhu Sangha festival. Every year in autumn time, September or October, we have our festival, Vaishnava festival on the Black Sea. सितंबर अक्टूबर में ये जो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है। And about 5,000 or 6,000 devotees are gathering together in order to participate in kirtanas or in order to listen to some classes of our spiritual masters who also take part in this festival. तो 5,000 से 6,000 तक लोग इसमें आते हैं अलग अलग कार्यों के लिए, कीर्तन के लिए, अपने जो गुरु महाराज हैं उनको सुनने के लिए। So this festival we have every year, of course. In 2020, because of COVID-19, we had no opportunity to have this Sadhu Sangha festival, and we had this festival in 2021. We had this festival for a small group of people. But now we hope that this year, maybe by mercy of Krishna, maybe we will be able to arrange this festival as usually we do it. 2020 में कोविड के कारण हम नहीं कर पाए इसका आयोजन, लेकिन 2021 में छोटे कम लोगों के साथ हमने इसका आयोजन किया था, और भगवान की अगर दया रही तो इस वर्ष हम अवश्य इस फेस्टिवल का साधु संघ
जो फेस्टिवल है इसका हम आयोजन करेंगे। So here you can see our Moscow temple. This picture, which is this picture, it is Govardhan Puja. Govardhan Puja in Moscow temple. This one. गोवर्धन पूजा का तस्वीर आप देख सकते हैं। And what else? It is the celebration of different Vaishnava holidays in Moscow temple, and on one of these pictures seems to be it is Gaur Gopal Prabhu from India. Seems to be he also was visiting Moscow at least once. Seems to be this Gaur Gopal. Do you know Gaur Gopal? Yes. तो यहाँ पे जो है अलग अलग त्योहार है जो वैष्णव के, उनका आयोजन हो रहा है और गौर गोपाल प्रभु जी भी इस त्योहार में आए थे, इसमें किसी एक पिक्चर में से। Let's see. Seems to be he is Gaur Gopal, right? Yes, right, Prabhuji. He's Gaur Gopal Prabhuji. Yes, he was taking place in some programs in Moscow temple. Gaur Gopal Prabhu ki jai. Hare Krishna. Okay, let's go further. So we have some dramas. We have, and Bitu Malik also takes part in our celebrations. Bitu Malik married on one Russian Mataji, and now he is situated in Russia, and he is Brijabasi. Bitu Malik, he is Brijabasi, and he's from Vrindavan, and many generations. He is a singer, and many generations before him, his father, his grandfather, and so on, they also were singers. He is nice singer, Bitu Malik. What name, Prabhuji? Bitu Malik. Okay, Bitu Malik. So जो पिक्चर देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे गायक हैं और इनके फादर भी, इनके कई जनरेशन से ये लोग मतलब जो ये संगीत जो है गाते हैं, भजन। Okay, let's go further. So, okay, again, you can see the picture of our deities. And now let's say like Shri Doyal Nitai Shachisuta Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Worldwide iskcon movement Ki Jai. Hare Krishna. And now if you have any questions, I am ready to answer on these questions. Is this Madhav Murari Prabhu ji ki jai? Thank you so much, Prabhuji. So first of all, we would like to express our gratitude by chanting Hare Krishna Mahamantra for Prabhuji. So please, everyone, all of you, unmute yourself, and yes, now you can unmute yourself and let's chant Hare Krishna, 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 Hare, Krishna, Hare, Hare, Rama, Haribol. His Grace Madhav Murari Prabhu ki jai. Hare Krishna. Thank you so much for your kind participation. So if you have any question, अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है, आप प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभु जी विल आंसर. ओके, अगर वीडियो ऑन करके आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रभु जी आपको देख पाएंगे और अच्छे से बातचीत हो पाएगी. सो आप लोग प्लीज अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप वीडियो ऑन करके पूछिए. अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क डायरेक्टली इन इंग्लिश टू प्रभु जी, एंड इफ यू वांट टू आस्क इन हिंदी, अगर आप हिंदी में पूछना चाहते हैं तो आई विल ट्रांसलेट, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा. सो फर्स्ट जिसका वीडियो ऑन है यहाँ पर है वो है सोहम प्रभु जी. सोहम प्रभु जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna. So my question is that how to choose the person if I meet in front of me any day, he may be devotee or non-devotee, how to choose that that he will cheat me or not? First of all, we should listen to Srila Prabhupada's classes on the regular basis. What about translation? Is it needed or not? Translation to Hindi. I'll do, Prabhuji. तो सबसे पहले तो हमें श्रीला प्रभु जी का प्रश्न है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई हमें चीट करेगा या नहीं करेगा. तो प्रभु जी बता रहे हैं उसका उत्तर कि सबसे पहले तो हमें श्रीला प्रभुपाद जी के जो ट्रांसलेशन है उन्हें पढ़ना चाहिए.
Okay, so first of all, we should listen to Srila Prabhupada's classes on regular basis, and it will help us to understand what is right, what is wrong. Because in iskcon, each and every spiritual master or each and every senior devotee is nothing but Srila Prabhupada's representative. तो हमें सबसे पहले तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को सुनना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं, जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, वो सब श्रील प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं. At the same time, you can ask, but what if I will understand Srila Prabhupada's message in the wrong way? What if I will do like this? I will understand Srila Prabhupada's message in the wrong way, and after this, I will be trying to compare this message with message of iskcon devotees. Will it help me or not? If I will do like this. So, as per my understanding, what Prabhuji is saying that Prabhuji, you have said that we should. Yes, if you are not sure what I'm saying, you just ask me. Yeah. Please. I should repeat again, right? Okay. You can ask, for example, you can ask what to do if I will understand Srila Prabhupada's message in the wrong way. How can I be sure that my understanding of Srila Prabhupada's message is proper understanding? तो अगर मैं प्रभुपाद जी को सुनता हूं, तो अगर मैंने उनको गलत समझ लिया, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो सही नहीं समझ पाया, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो सही है या नहीं? So it is exactly why we need to have Srila Prabhupada's representative. Srila Prabhupada's representative helps us to understand Srila Prabhupada. We can understand Srila Prabhupada's message to some extent according to our conditioning, and the spiritual master helps us to understand this message better, and also he helps to understand what is how we can apply this message practically. इसीलिए हमें आवश्यकता है श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रतिनिधि की, जो हमें बताएंगे कि वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं और उसे कैसे प्रैक्टिकली हम अप्लाई करें अपने जीवन में. So it should be done simultaneously. We should listen Srila Prabhupada's classes on the regular basis because it is our foundation, and at the same time we should take shelter of some senior devotee in iskcon or spiritual master. तो हमें हमेशा प्रभुपाद जी का बार-बार हमें प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने चाहिए, और उसके साथ ही हमें कोई वरिष्ठ जो इस्कॉन के भक्त हैं उनका आश्रय लेना चाहिए. Does it answer on your question? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, next, Vikas Prabhuji, you can ask. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, my requirement chanting mala, so please you support me. How should I support you? What is needed? Chanting mala. What do you mean? What kind of help do you need? My requirement chanting mala. He wants chanting beats, so he is asking. You want chanting beat to get couriered at your home, right? Yeah. Okay. He wants chanting beats, Prabhuji. We will send. Okay. But what I should do? What I should do? What is expected from me? I mean, what is expected? आपकी क्या सहायता कर सकते हैं इसमें? आपका मतलब यही प्रश्न है, और भी कुछ, मतलब कुछ प्रश्न भी है आपका इसके अलावा? नहीं, यही प्रश्न है मेरा. तो मुझे कैसे ये चैंटिंग माला मिलेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रभु जी से. ठीक है, तो मैंने आपको नंबर दिया है चैट बॉक्स में, आप उस पे कांटेक्ट कीजिएगा. आपको सो प्रभु जी, बेसिकली ही वांट चैंटिंग बीट्स. आई हैव गिवन हिम द नंबर, ही विल कांटेक्ट एंड विल सेंड. Okay. Chant Hare Krishna and be happy. Thank you. Okay. Thank you. Hare Krishna. Next question. Okay. Sana Mataji. Yes, Sana Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Mataji. Prabhuji, I don't know whether I should ask this question or not, but question came in my mind, so I'm asking. Let's try. Yes. Let's try. Let's see what will happen.
Yeah, the question is like this Hare Krishna mantra does arouse our what to say, arouse our Kundalini power? Is it related to that? Well, it can be related to that, but it is not the most important thing. Of course, on the level of subtle body, some changes are going on, but the main point is that we can awaken our dormant love for Krishna because of chanting Hare Krishna Mahamantra. Please तो translate. माता जी का माता जी का प्रश्न है कि क्या महामंत्र का जप करने से कुंडलिनी पावर जो है, शक्ति, वो भी जागृत होती है? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स होता है, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है कृष्ण प्रेम जागृत करने की। Which is more important? हाँ, वो अधिक जरूरी है, वो आवश्यक है। Why I ask this question, Prabhuji, because there are not many changes I can see within myself towards my attitude, daily routine. Matlab I'm getting on and off, my mood flicks. So lot many changes I can see myself. So that was the reason. And I am chanting other mantra as well. So can I do that? Can I continue doing that? Or is it itself enough for me? Mahamantra is it enough for me to do? So what you suggest? Please advise. Of course, Hare Krishna Mahamantra is enough because it includes everything. All Krishna's energies are, and Krishna himself is presented there. So there is no need of other mantras. तो माता जी पूछ रही हैं क्या इससे अगर मुझे फायदा हो रहा है तो इसका आवश्यकता है कुंडलिनी पावर जागृत करने की, या सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करें? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करें, उसी में सब कुछ समाहित हो जाता है। But at the same time, you are telling that you cannot, that you see that there is no, that, how to say, you are saying that not so many changes took place in your life, right? You told like this. So first of all, we should understand, according to Srila Rupa Goswami's instructions, the book is called Nectar of Instruction. Maybe you have this book in your library. If you don't have, I advise you, because you are asking what I can advise, I advise you to buy this book, Nectar of Instruction, written by Rupa Goswami. In our BBT, Bhaktivedanta Book Trust, this book, in iskcon temples, you can buy this book, Nectar of Instruction. Please translate. Translate. प्रभु जी बता रहे हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक है, पुस्तक है, आप उसको लीजिए और उससे आपको लाभ होगा। So in this book, there is a verse number 3, and the qualities that are required in order to progress spiritually in devotional life, these qualities are mentioned in the text number 3. तो टेक्स्ट नंबर 3 जो है, श्लोक संख्या, उसमें इसमें बताया जा रहा है क्या क्वालिटीज हमें चाहिए भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए। So one of these qualities is dharyat. Dharyat means tolerance, patience, and it means that we cannot expect the immediate result when we practice bhakti yoga, or basically any kind of yoga. We cannot expect that result will be immediate. इसमें बताया जा रहा है धैर्य रखने के लिए कि किसी भी चीज में हमें धैर्य रखना है, क्योंकि इमीडिएटली तुरंत हमें जो है फायदा नहीं होगा किसी भी चीज में। And a very nice example is given if, for example, a woman wants to have a child, time is needed. First of all, her husband should agree that yes, okay, we should have a child, and after this, we have to wait for 9 months, and then this embryo comes out, so it takes time. The same way, we can achieve something, we can get something on the spiritual path only if we are practicing for reasonable period of time. उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर एक स्त्री है, उसको अगर बालक चाहिए, तो उसको सबसे पहले तो उसके पति को तैयार होना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमें बालक चाहिए। उसके बाद 9 महीने का समय और लगता है, तब जाके फिर एम्ब्रियो आता है और उसके बाद जाके बच्चा आता है। तो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी ऐसा ही है, हमको एक समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, कुछ समय देना होगा हमें इस चीज के लिए।
And also it depends on the intensity of our practice. If not so many things changes in our life because of Bhakti Yoga, maybe our practice is not so much intense. तो हमें इसमें तीव्रता भी डिपेंड करता है कि हम कितने तीव्रता से हम जो है इसका पालन कर रहे हैं भक्ति योग का, वो भी एक पहलू है. So this situation should be analyzed. Do I execute enough devotional service? Do I have enough sufficient sadhu sangha like this? Do I read books on the regular basis? What about my japa? I didn't get japa, chanting of the holy names. Japa. Yeah, but from the starting, Prabhuji, please. I'm sorry. Okay. So we should analyze our spiritual life. Translate. Yeah. तो हमें अपने जो आध्यात्मिक जीवन को एनालाइज करना चाहिए. What about our japa? How our japa goes? How our japa goes? Okay, हमारी जप की स्थिति क्या है? Okay. Do we read Srila Prabhupada's books on the regular basis? क्या हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ रहे हैं? Do I have sufficient sadhu sangha? क्या हमें भक्तों का सही पूरा संग मिल रहा है? Sufficient? Do I execute enough devotional service, or I should execute more devotional service in order to be more absorbed in Krishna consciousness? तो इस कृष्ण भावनामृत में और ज्यादा संलग्न होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या मुझे और प्रयास करने की आवश्यकता है? If we are under the guidance of a senior devotee, it will be much more easier for us to analyze our situation, our spiritual state. अगर हम किसी वरिष्ठ भक्त के आश्रय में हैं, तो हम बहुत आसान होगा हमारे लिए अपनी स्थिति को देख पाना, माप पाना. Does it answer on your question? Does it answer on your question? क्या आपको अपना उत्तर मिल गया, माता जी? Yes. Okay. Hare Krishna. So we have 2 minutes more. Yes, I got the answer. Yes, I got the answer. Thank you so much. And I am, I started this part. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Tike. Okay. We have 2 minutes more, right? Right. So we can take one more question. Right. Okay. हम आखिरी प्रश्न लेंगे क्योंकि 2 मिनट बचा है हमारे पास. तो किसको ले हम? Vidisha, you can ask. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so what is the question? जी आपके पीछे बहुत वॉल्यूम आ रहा है. What's going on? Hare Krishna. Are you going to ask something or not? I think Prabhuji is some problem in her home actually. That's why she is not asking. Maybe. Okay, let's ask another person to ask the question. So Mataji, you can ask later on. आप बाद में पूछ सकते हैं अपना प्रश्न. Okay, no problem. Okay, अनुराग प्रभु जी आप पूछ सकते हैं. अनुराग प्रभु जी, you can ask. Okay. Hare Krishna Prabhu ji. Hari bol. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. So Prabhu ji, my question. Haribol. Prabhu ji, my question is that how to maintain the consistency in the bhakti, in the devotional activities. How to maintain? Consistency, it is what? I have to look in my dictionary. One moment. Consistency, it is what? Consistency. Consistency. Okay, now I understood. Okay, all the consistency, all the logic of this spiritual practice is explained in our sacred scriptures. Translate. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम कंसिस्टेंसी, स्थिरता कैसे लाएं भक्ति में. तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभु जी कह रहे हैं कि शास्त्रों में इसका उत्तर हमें मिलता है, शास्त्रों में बताया गया है. According to our sacred scriptures, there are stages
it goes from Shraddha to Prema. तो शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से प्रेम तक का जो है हमें सफर तय करना होता है. First of all, we have some interest to spiritual message. It is Shraddha stage. Then when we are ready to follow some instructions, it is called Sadhusanga stage. सबसे पहले हमारे श्रद्धा होनी चाहिए कुछ, उसके बाद फिर हम भक्तों का संग, साधु संग करते हैं. Because if we just like to listen to saintly people, but we are not about to follow their instructions, it means that actually sadhu sangha doesn't take place. Only it is just Shraddha level. अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का संग करते हैं, साधु संग जिसे अगर बोलें कि जो कि फॉलो नहीं करता है, तो उसका कोई लाभ नहीं है. Then when we take spiritual initiation from spiritual master, Bhajana Kriya starts. It is the stage when we are trying to perform devotional service under authoritative spiritual guidance. उसके बाद हम आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते हैं और फिर हमारी भजन क्रिया शुरू होती है आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में. And simultaneously we have this anartha nivritti process when we gradually become free from different things in our hearts that are not beneficial for spiritual advancement. के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, जो हमारे हृदय में बहुत सारे दोष हैं उनका जो है वो हटते हैं वो. When we become free from these anarthas, to some extent we become free from these anarthas, then it means we reach this nishtha stage. Nishtha means steady faith. तो जब अनर्थ निवृत्ति होती है थोड़ी बहुत, तब हम निष्ठा के लेवल पर आते हैं. And so on, and so on. It can be found in this book written by Vishwanatha Chakravarti Thakur, and this book is called Madhurya Kadambini. माधुर्य कदम्बनी जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है, उनके पुस्तक में ये पाया जाता है. So consistency is there because all these anarthas are mentioned and explained, and different difficulties that one will face when he is trying to progress spiritually. All this is mentioned in this book and in other books of our acharyas, and spiritual master also helps us to understand the consistency, how it goes. तो इन पुस्तकों में अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी, स्थिरता कैसे आएगी, उनके बारे में बताया गया, और हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हमें इसमें सहायता करते हैं. Does it answer on your question? Thanks a lot, Prabhuji. Thanks a lot. Hare Krishna, Anurag Prabhu. Okay, okay, Venugopal Charan Prabhu. Officially, our time is out. What should we do? Should we stop, or we have enthusiasm to continue? What should we do? If you want, if our guests wants, we even can. I don't know when, but we can arrange special session, question and answers session if you like. I'm not. I don't mind. We can do it one day. I don't know when, but it is possible. Yes, definitely, because we have so many questions from so many devotees, so we can have another question and answer session. Venugopal Prabhu, then you just collect these questions. If it is possible, and maybe we will arrange something. If our guests, if devotees are so interested to get answers, why not? We can arrange, right? If you like to arrange, if it is possible. Definitely. I'm ready. I'm ready to serve. I'm ready to answer. That's so great of you, Prabhuji. So Prabhuji is ready to give time. So we will send some Google form, and we will take your questions, collect your questions, and we will ask from Prabhuji and revert you. Hare Krishna, thank you for invitation. It was very nice to be with all of you. Thank you so much, Prabhuji. So once again, we would like to thank Prabhuji with Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Prabhuji is again giving one session on 24th, I think. I need to check. We will send you a group morning session. Prabhuji will give on 24th. Yeah, 24th January. So you 23rd. Sorry, it will be Sunday. Sorry, please pardon.
Yeah, please pardon me. So it's 23rd January. Prabhuji will be giving class in the morning. So you all are invited. We will send you the link. हम आप सबको जो है ग्रुप का लिंक, मीटिंग का लिंक भेज देंगे और प्रभुजी का सेशन आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं. So thank you so much, Prabhuji, for joining. Thank you so much for giving your precious time to all of us. And please forgive me, Prabhuji, if maybe I've said something wrong. So please forgive me. No. Everything that you told is absolutely right. It is okay. Thank you so much. Krishna. Thank you. So आप सब के लिए जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारा जो अगला सेशन है वो होगा हमारा नेक्स्ट जो वीकेंड है हमारा 15th राइट, 15th एंड 16th, 15th और 16th को हमारा नेक्स्ट सेशन होगा. 15th को मोस्ट प्रोबेबली द सेशन स्पिरिचुअल एम्बेसडर श्रीला प्रभुपाद. ओके, एंड देन 16th को हमारा सेशन होगा और उसके फिर आगे की जानकारी हम आपको आगे देंगे. तो जिसने भी गूगल फॉर्म नहीं भरा है आप लोग प्लीज भर दीजिए गूगल फॉर्म. हम अभी 2 मिनट तक हम यहीं पर हैं, आप लोग गूगल फॉर्म भर सकते हैं और आई होप आप सब हमारे ग्रुप्स में ऐड होंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. वी विल एंड दिस मीटिंग आफ्टर 2 minutes. प्लीज फिल द फॉर्म सेंट इन द चैट बॉक्स. हरि बोल. Okay, so we will have one video to play for you. तो आप लोग जब तक गूगल फॉर्म भर रहे हैं हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं. ओके, ये किसने स्क्रीन शेयर कर दिया? ओके, सो प्रभु जी ने आज जैसे कि सेशन में हमें बताया मिस्टर गोर्बाचेव के बारे में, राइट? तो हम उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं वीडियो में. इस वीडियो में बताया गया है उनके बारे में. द प्रोटेस्ट जो बता रहे थे प्रभु जी ने अभी सेशन में बताया था प्रोटेस्ट के बारे में, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है. सो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू प्ले. वैभव प्रभु, कैन यू प्लीज प्ले दिस वीडियो ऑन यूट्यूब? आई एम जस्ट हरे कृष्णा. वैभव प्रभु और anyone is there? अनुष्का माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ माता जी, ये वीडियो है एक, आप दिखा सकते हैं? यस प्रभु जी, बट हमारे From पास YouTube. लिंक प्रभु जी आप मैंने लिंक भेज दिया माता दीजिए. जी. ऑलरेडी सेंड माता जी, प्लीज से. यस प्रभु जी, हम शो करते रहे. ओके, सो आप लोग अभी ये वीडियो देखिएगा और जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं गूगल फॉर्म, देन वॉच दिस वीडियो.